हर जिब्बा पर देखी जाएगी मेरी माद खाला, हर घर में देखा जाएगा मेरे साथी का प्याला, हर घर में चर्चा अब होगी मेरे मधु विक्रेता की, हर आंगन में गमक उठेगी मेरी सुरभित मधुशाला। I see a work of art in everything I see. I see aesthetics in the way a dignified life carries itself. I hear a rhythmic composition in the voice of every genuine effort. And then I look within and I search and I ask, what indeed is the raw material of this extraordinary passion for life? What is the driving force which propels this motivation to change historical customs, or rather, what inspires one to compose an all-new epic? What is dignity? What is that pride made of, which refuses to be shaken by harsh realities? What are the virtues of a person whose invincible sense of life defines traditional wisdom? What should I call him who embodies such a winning spirit? I call him Dhirubhai Ambani. And rightly so, with due admiration and due reasons. Dhirubhai was not a beneficiary of the wealth which was acquired by many during our independence of 1947. Dhirubhai had no such luxury. Where the measure of the credibility and value of a business or a business association is judged by the number of generational years the individual or business has been involved in, Dhirubhai had no such luxury. He was not the third or fourth or fifth generation businessman. He was the first generation, a first generation that grew to be the first. That is the rarity of the man I call Dhirubhai Ambani. A company, a venture, an organization, or even an economic territory can be driven by visions, missions, and the discipline of structured systems. But I believe individuals who make all that happen are driven by nothing but their own sentiments and their own convictions. An individual who has only his own convictions to trust and rely upon, and then goes on to touch the lives of every citizen in the country for the better, all in a single lifetime, is an individual who is first and foremost fully convinced of his own sentiments. Such an individual I call Dhirubhai Ambani. In an essay on nationalism, Gurudev Rabindranath Tagore had written that a nation in the sense of the political and economic union of a people is that aspect which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose. A society as such has no ulterior purpose. It is an end in itself. This is what he said. Long before calling ourselves a political and economic nation, we have always been a human society. We are a civilization. Our history is not about the rise and fall of kingdoms. Our narrative has always been about our social lives and spiritual ideals. It's been about our heroes. This then is the reason that I believe a phenomenon called Dhirubhai Ambani could have happened only in India. We believe that humanity comes before a nation. We believe that humanity begins with the character of our own life. We believe, and therefore we are. This is something I believe which is at once individual and universal.
An end, an objective, a purpose cannot govern a sentiment. The sentiment is a priority. That sentiment must occur before anything else. I'll give you my own example. I'm an actor. Acting as a performing art is a purpose, an objective of a sentiment which I carry within me. The purpose cannot make the sentiment happen. To put it simply, I cannot enact a role if I don't feel like it. So, permit me to extend this analogy to the industrial enterprise of Dhirubhai. I believe opportunities did not invite Dhirubhai to his dreams. His dreams invented those opportunities. The virtues, the skills, and the acumen of performing can come with those opportunities. But a dream comes with neither the know-how nor the opportunity. It comes all alone, with nothing but itself to offer. So the faith in that dream, the faith in its rationality and goodness, the faith in its fairness is what I call confidence. This confidence, ladies and gentlemen, is not a white paper. It is not an abstract. It is there right before us. The sheer magnitude of Dhirubhai's achievements is evidence that his confidence was not a figment of his imagination. His confidence was not only grounded in the reality surrounding him, but also it did not prey on precedents. His confidence did not cannibalize existing philosophies. On the contrary, his confidence constructed an all-new reality in its wake. Ladies and gentlemen, philosophy is not a code of conduct. Philosophy is not a metaphysical view of life. Philosophy is our relationship with reality, our relationship with the nature of existence. Dhirubhai changed the object of that equation and left the subject to us. He changed the nature of existence and left the philosophy for us to decide. And that is the hallmark of a real leader with an extraordinary dream which simply refuses to go away. Sentiments, I feel, save a dream. Sentiments save a dream. A dream cannot be planned. It just occurs. We do not choose our dreams. The dream chooses us. And the only thing which can hold it long enough till it materializes is its sentiment. Especially when the path required to dream, to realize, has to be constructed from scratch. The choices one makes, not as a leader, nor as a director, as the owner of that sentiment, are not choices which can comply with any status quo. Those choices are neither for challenging the prevailing standards, nor for changing them. In fact, those choices simply do not acknowledge the existence of a status quo. They literally work on a set of principles which have never been recognized before. And so in conclusion, I leave myself with more questions than answers. Pray tell me, ladies and gentlemen, what really is the value of this dream? What is the net worth of the sentiment? Can it ever be quantified? Does it really have a purpose? Can any corporate objective really fulfill a dimensionless dream? Where does it begin? And where does it end? As I said earlier, our narrative has always been about our social lives, spiritual ideals, about our heroes. And this is the reason I believe, ladies and gentlemen, that a phenomenon called Dhirubhai Ambani could have happened only in India. And now for those who are
इंग्लिश चैलेंज जिन लोगों को अंग्रेजी से थोड़ा सा क्रोध है, उनके लिए कुछ शब्द हिंदी में। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं अंबानी और रिलायंस परिवार को अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कई बार लोग कहते हैं धीरूभाई अंबानी के बारे में इतना कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, उनका जीवन तो एक खुली किताब है, हर साल वही किताब पढ़ने से दोहराने से क्या फायदा। तो जवाब उसका ये है कि गीता को हम बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हर बार जब हम गीता को पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक नई सीख, नई सोच, एक नया उद्देश्य मिलता है। धीरूभाई का जीवन गीता उपदेश से कम नहीं था। कर्मयोगी थे वो, कहते थे ईश्वर ने हमें दो मार्ग दिए हैं उन तक पहुंचने के लिए, एक भक्ति और ध्यान का और दूसरा कर्म और ज्ञान का। मैं दूसरे मार्ग पर चलने वाला इंसान, कर्म को धर्म मानता हूं और ज्ञान को ही ईश्वर। हिंदुस्तान को जिसने गुलामी की मानसिकता से जगाया, जिसने हमारी क्षमता से परिचय करवाया, टेक्नोलॉजी को गले लगाया और एक ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का निर्माण किया कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हुक्मरानों ने ये पूछना शुरू कर दिया कि हु इज दिस धीरूभाई एंड वेयर इज ही फ्रॉम। धीरूभाई का मानना था कि लोगों में खुशी के साथ साथ अपनापन बांटने से भरोसा बढ़ता है। शायद इसीलिए जो अभी ईशा और राकेश ने कहा, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया रिलायंस, भरोसा। ये पूछे जाने पर कि वो सबसे ज्यादा खुश कब होते थे, तो जवाब मिला जब हिंदुस्तान खुश होता है। अपनी दौलत, अपनी संपत्ति को बांटना, यह उनका व्यक्तित्व था। छोटे से छोटे दफ्तर में पीएम से लेकर के होटल के कर्मचारियों, सड़क पे चलते आम आदमी को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स बांटे और उन्हें धन बनाने का अवसर दिया। देवियों सज्जनों, मुझ पर भी एक बार उनकी दया दृष्टि पड़ी। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस जीरो यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया, देवियों सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊं। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठे। मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता।
उनका ये व्यवहार और उनके वो शब्द मेरे लिए उस धनराशि से हजारों गुना ज्यादा मूल्यवान थे, जितना कि वे मुझे मेरी संकट से बाहर आने के लिए देने के लिए तैयार थे। ये उनका व्यक्तित्व। धीरू भाई अपने देशवासियों के लिए क्या मायने रखते थे, उस पर एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी टेल को मैं यहां बयान करना चाहूंगा। दो बुजुर्ग कमरे में बैठे कुछ गंभीर बातें कर रहे थे और उसमें व्यस्त थे। एक बुजुर्ग का पोता जो था, छोटा बच्चा, कमरे में खेल रहा था, इधर उधर दौड़े, आवाज करे और अपने दादा को डिस्टर्ब कर रहा था। बच्चे को वहां से हटाने के लिए बुजुर्ग ने वहां पर पड़ी एक मैगजीन का पन्ना फाड़ा और उसके कई टुकड़े कर दिए। बच्चा देखकर चिल्ला, अरे दादू ये क्या किया आपने? इस पर तो हिंदुस्तान का नक्शा था, आपने तो फाड़ दिया इसे। दादू ने बच्चे से कहा, चल जा, तू जोड़ दे, जा जोड़ के लेके आ जा। बच्चे को कमरे से बाहर भेजने का उपाय अच्छा था और कुछ ही मिनटों में वो बच्चा वापस कमरे में और हाथ में जुड़ा हुआ पन्ना। दादू हैरान, पूछा, इतनी जल्दी कैसे जोड़ दिया? बड़ा आसान था दादू, बच्चा बोला। इसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने उस तस्वीर को जोड़ा और इंडिया अपने आप जुड़ गया। दादू ने पन्ना घुमाकर देखा, पीछे सारे इंडिया को जोड़ने वाले धीरू भाई अंबानी की तस्वीर थी। देवियों से नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुकेश भाई अंबानी को कि वो यहाँ मंच पर आए और अपनी बातें आपसे करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुकेश